Hello everyone, welcome back to my channel. I am Natasha and you're watching my channel Spark Style. How are you all? Hope you all are fine. Today I'm gonna create this makeup look with few simple steps. If you want to see, let's get started. So guys, the first thing is to moisturize your skin. Here I have taken a moisturizer which suits to my skin. एंड देन हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे थ्रू आउट आवर फेस एंड नेक एंड देन हम अपने फेस को प्राइम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमर ऑब्वियसली. सो मैंने यहाँ पर ले लिया है प्राइमर. अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं लेना है आपको. इसे आपको पूरे फेस में अच्छे से स्लोली ब्लेंड कर लेना है, अप्लाई कर लेना है थ्रू आउट योर फेस. Primer makes your face soft, smooth and blocks your open pores. And now we are gonna fill in our brows. So here I have taken the Cocoa shade from the Huda Beauty eyeshadow palette. So guys, आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसे fill in करना है on your eyebrows. So मैं सेम प्रोसेस में ही अपने दूसरे आईब्राउ पे भी fill in कर लूँगी. You have to follow the same process guys. And once you are done, फिर आप इसे कोई भी eyebrow comb से comb कर लीजिए just to settle up and fix and mix each and everything together and जैसे अच्छे से blend भी हो जाए. अब मैंने यहाँ पर लिया है Mars का contour and concealer stick. Now I will use the concealer part just to draw lines around my eyebrows. ये आपके eyebrows को एक अच्छा सा finishing and sharpness देगा. Now I'm gonna blend it fully and properly. आपको इसे हल्के हाथ से blend करना है, कोई भी force नहीं देना है. आपको dab motion में से blend करना है, ना ही कि drag करना है. So I'm gonna apply the same process again to blend the concealer properly. One more thing guys that मैं skip कर चुकी हूँ, so sorry for that. आपके ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में भिगो कर इसे ब्लेंड करना है, वरना ये उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा. So guys, now you can see पूरा अच्छे से ब्लेंड हो गया है. अब हमें इसे सेट अप करना है with the MAC कॉम्पैक्ट पाउडर. आप चाहें तो कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं बिल्कुल मैटी फिनिशिंग लुक आ गया है. So again from the same eyeshadow palette I have taken the shade Sandalwood. So now I'm gonna apply it around my crease area. And again the most important part that you have to blend it properly so that no harsh line could be visible. Then again I have taken the 24K shade from the same eyeshadow palette. It's a kind of shimmery gold eyeshadow you can say. And guys, this time मैं अपना आई मेकअप थोड़ा सा लो रखूँगी just because I need a natural look. And the most important part again that you have to blend it properly just because जैसे कोई भी harsh line visible ना हो. And now again I'm taking Moondust shade from the same eyeshadow palette again just to highlight my inner corners. And now I'm gonna apply eyeliner on my eyes. मैं बिल्कुल thin line draw करूँगी and I'm gonna draw a wing eyeliner. And now I'm gonna apply false eyelashes just to change the look into a gorgeous one. And I love applying false lashes guys because ये आपके आँखों पे एक अलग सा जान डाल देता है, you can say, means it looks so pretty and beautiful. So here I am done guys. और एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, जब मेरा मेकअप बहुत ब्यूटीफुल होता है ना, मैं अपने आप पे ही पागल लोग की तरह गाना गाना शुरू कर देती हूँ. Sorry guys, please ignore. Now again coming into the makeup and starting up with my face makeup. यहाँ पर मैंने लिया है MAC का फाउंडेशन.
और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैब डैब करके फेस में पूरा अप्लाई कर लूँगी एंड देन आई विल ब्लेंड इट थ्रू आउट माई फेस प्रॉपरली. एंड वन मोर थिंग गाइस, सो सॉरी आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट अगर आप फॉल्स आई लैशेस अप्लाई करते हो तो यू हैव टू कोट इट आफ्टर with your mascara or else it will not give the finished look of your eyes. And again I'm taking the MAC compact powder just to settle up my foundation properly throughout my face. So now I'm gonna contour my face. Especially I don't use any kind of contour, just to contour my face. So again I have taken the same shade from the Huda Beauty palette, which is Cocoa shade, which I have used earlier to apply on my crease lines. And I'm also contouring my forehead. As you can see, I'm having a huge forehead. And I'm contouring my nose as well. You can see with the help of a flat and small brush. And I'm gonna blend it properly towards the downward motion of my nose. And now I'm gonna conceal my face with the same concealer stick from Mars. And I'm gonna conceal my forehead, my nose, my under eyes, my chins. And my cheeks line as well, just to sharpen up the contour part. And again I'm blending my concealer with the help of a beauty blender. एंड आपको डैब डैब मोशन में ही ब्लेंड करना है. अगेन मैं आपको ये बार बार बोलूँगी कि आपको फोर्स नहीं अप्लाई करना है. स्लो हैंड से आपको स्लो ब्लेंड करना है. And now again I'm applying the MAC वाला compact powder. The most important part of makeup is that आपको अच्छे से foundation, concealer, contour या कुछ भी आप करते हो उसे अच्छे से आपको set करना है आपके face पर. And guys, here I'm using the Swiss Beauty Duo Pack, which is highlighter as well as bronzer. And guys, again I'm applying highlighter क्योंकि I'm the highlighter addict one, you can say. मुझे पता है कि मैंने लगाया था with the bronzer and highlighter duo pack, I know, but still I'm applying highlighter just because I want my face, my makeup to be glown up. So I'm applying highlighter on my nose, my forehead, you can see, my chins and my upper lips as well. Now I'm gonna apply kajal on my waterlines. You can also apply the kajal on your upper waterlines, but just because I'm not comfortable with that, that's why I'm not doing so. क्योंकि guys मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा ही पानी आता है and my face looks cry, so I don't want to waste my makeup after doing so. And now guys, I have taken the super matte lip liner in the shade 069. I'm so sorry guys that I think that I have not recorded this part, or maybe it has been deleted by me by anyhow, so I couldn't show the applying part of the lipstick.
But after applying the lip liner, I have used the Huda Beauty matte lipstick. So now I'm gonna fix my makeup with the help of a makeup fixer which is of Swiss Beauty, which contains aloe vera with vitamin E. So let it dry. And here is my final look, guys. And one more thing, friends, if I have done any kind of mistakes while this makeup tutorial, then please do let me know in the comment section below. I will love to hear. For watching my video. If you liked my video, if you like my makeup, please do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for getting new updates on my channel. Tab tak ke liye bye bye.